हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 10th स्टैंडर्ड CBSE की टेक्स्ट बुक है उसमें से हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हम पैसा रोज़मर्रा ज़िंदगी में खर्च करते हैं। लुक अराउंड यू एंड you would easily be able to identify several transactions involving money in a single day. आप अपने आजू बाजू देखेंगे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक दिन में। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं पैसे के चक्कर में, राइट। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में सर्विसेज भी पैसे के तौर पे एक्सचेंज किए जाते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। किसी किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉमिस किया जाता है कि पैसे बाद में पे करेंगे, अभी नहीं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांजैक्शंस पैसे से क्यों बनते हैं? द रीज़न इज सिंपल। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. हर किसी को पैसे कमाने हैं और पैसे से अपने commodities बेचने हैं, ठीक है। सो इस वजह से पैसे का लेन देन होता है। Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money. पहले वो अपने शूज़ जो बनाए हैं वो पहले बेचेंगे, then exchange the money for wheat, और फिर उसी पैसे से वो wheat खरीदेंगे। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. कितना मुश्किल होता कि शू मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली शूज़ एक्सचेंज करने पड़ते वीट के लिए बिना पैसे के। He would have to look for wheat growing farmer who only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. उन्हें ऐसा किसी को ढूंढना पड़ता था जो ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ता था जो वीट ग्रो कर रहा है और वो शू के बदले वीट खरीदे यानी दे दे। That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. This is known as double coincidence of wants. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. जो पर्सन चीज़ें बेचना चाहता है वो वही चीज़ है जो एक बायर खरीदना भी चाहता है। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. ठीक है। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the needs for double coincidence of bonds. So यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज होता है, इसलिए यहाँ पे डबल coincidence of bonds नहीं बनते. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoe. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शू मैन्युफैक्चरर एक फार्मर को ढूंढे जो उनके शूज़ खरीदेगा, at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. उन्हें से बायर ढूंढना है शूज़ खरीदने के लिए। Once he has exchanged his shoe for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as medium of exchange. Money को medium of exchange भी कहा जाता है students. Modern forms of money. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. बहुत सारे objects money के तौर पे use किए जाते थे. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper, coins, a phase which continued well into the last century. वो बहुत टाइम तक चला students. फिर आया currency. Modern forms of money include currency, paper notes and coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. Modern currency जो आप देखेंगे वो gold, silver and copper से नहीं बनी है students. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. ठीक है। Then why it is accepted as a medium of exchange? So उसे क्यों accept किया जाता है? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country.
In India, the RBI, which is Reserve Bank of India, issues currency notes on behalf of the central government. Central government के behalf पे वो currency notes issue करते हैं. As per Indian law, no other individual or ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी. इंडियन लॉ के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को इसे इशू करना अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स. मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया. लॉ लीगलाइज किया है रुपी के यूज़ करने का, जो एक मीडियम ऑफ पेमेंट हो सकता है और उसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंडिया में. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. कोई भी इंडिया में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट जो रुपी में दिया जाता है. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. डिपॉजिट विद बैंक्स. The other form in which people hold money is as deposits with banks. स्टूडेंट्स आपने देखा ही होगा आपके पेरेंट्स मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स. लाइक एक टाइम पे थोड़ी ही करेंसी चाहिए होती है लोगों को. फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ. मंथ के स्टार्टिंग में उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है. व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. अपने आप से पूछे स्टूडेंट्स कि आपका बैंक में खुद का अकाउंट है? बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. बैंक एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और इंटरेस्ट भी पे करते हैं डिपॉजिट पे. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. Since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. इन्हें demand deposits भी कहा जाता है students. Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends in its essential characteristics of money that of a medium of exchange. ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए भी यूज़ होता है स्टूडेंट. जब बैंक में डिपॉजिट किया हुआ पैसा होता है, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश. आपने देखा होगा पेमेंट जो चेक से बनाए जाते हैं कैश के ज़रिए, कैश के अलावा. फॉर पेमेंट थ्रू चेक, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. एक चेक बनाता है वो एक specific amount का. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. एक instruction है, चेक एक पेपर है जहाँ वो बताता है कि एक particular amount है वो एक इंसान के खाते से दूसरे इंसान के खाते में जानी चाहिए स्टूडेंट्स. Thus, we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits make it possible to directly settle payments without the use of cash. So, अगर heavy पैसा है जो डिपॉजिट करना है या पे करना है, so चेक के ज़रिए हो सकता है स्टूडेंट्स. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute money in the modern economy. तो ये modern economy या latest economy का हिस्सा है स्टूडेंट्स. You must remember द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर. यहाँ पे देखना है कि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स. लेकिन बैंक के लिए देयर विल बी नो डिमांड डिपॉजिट्स और पेमेंट भी नहीं होता बैंक को चेक्स के अगेंस्ट डिपॉजिट्स के ज़रिए. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. So ये जो modern forms of money है, currency और deposit, ये बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है स्टूडेंट्स. लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स. लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. वो क्या करते हैं उन पैसे का जो पब्लिक से उन्हें मिलता है. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. Banks keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. बैंक एक बहुत ही छोटा सा proportion of deposit अपने पास रखते हैं. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. So 15% आपने जितना deposit किया है उतना वो cash रखते हैं students. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. और इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कोई depositor आता है withdraw करने के लिए पैसा तो उसे हाथों हाथ दिया जाए. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. और कोई ऐसे पर्टिकुलर डे में बहुत ही कम लोग आते हैं जो डिपॉजिटर्स आते हैं जो विड्रॉ करने आते हैं कैश को. इस वजह से बैंक वो उतने कैश 15% कैश वो मैनेज कर लेती है. बैंक्स यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. बैंक्स क्या करती है, लोन्स एक्सटेंड करती है.
देर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत बड़ा डिमांड है लोन्स का बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस. Banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. So ऐसा क्या करती है बैंक्स एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है जो सरप्लस फंड एक डिपॉजिटर के पास है और ऐसे इंसान को देती है लोन के तौर पे जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है. Banks charge a high rate of interest on loans than what they offer on deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. और ये जो डिफरेंस है जो चार्ज किया जाता है बोरोवर्स के बीच और डिपॉजिटर्स के बीच ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 43 पे हैं. टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. क्रेडिट के तौर पे बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में ट्रांजैक्शंस होते हैं. क्रेडिट जिसे लोन कहते हैं refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. वो goods और services के लिए पैसे प्रोवाइड करता है क्रेडिट पे और बाद में वो रिटर्न करने की प्रॉमिस लेता है. लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फेस्टिवल सीजन. It's a festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month time. 3000 pair of shoes उन्हें एक महीने में उन्हें डिलीवर करने क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. उन्हें ज़्यादा workers hire करने पड़े stitching और pasting के लिए. He has to purchase the raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loan from two sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now. ठीक है, एक क्या करता है वो लेदर सप्लायर से लेदर की मांग करता है एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर. एंड सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट. वो एक लार्ज ट्रेडर से एडवांस पेमेंट लेके वो कैश लेता है फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ईयर बाय द एंड ऑफ द मंथ. बाय द एंड ऑफ द मंथ वो पैसे लौटा देंगे. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. Salim क्या करता है क्रेडिट ऑब्टेन करता है इससे ताकि उसका शू बिजनेस सही से चले. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increases earnings. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. आइए देखते हैं स्वप्ना का क्या प्रॉब्लम है. स्वप्ना's प्रॉब्लम. स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड. 3 एकड़ के लैंड पे वो ग्राउंडनट ग्रो करती है. शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन. मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. ठीक है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं क्रॉप को और वो क्रॉप क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. Though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है अपने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड जब स्वप्ना उसे मारती है क्रॉप्स को. शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्जर अमाउंट. वो मनी लेंडर को पैसे नहीं दे पाती और वो डेट जो उनके सर पे होता है वो बढ़ती जाती है. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. लेकिन उसके earnings जो होते हैं वो enough नहीं होते old loan को cover करने के लिए. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. उन्हें एक part of the land बेचना पड़ा वो debt को cover करने के लिए. In rural areas, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. So crops को produce करने के लिए बहुत सारे credit की ज़रूरत होती है students. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. 3 से 4 महीने का गैप होता है जब farmers इन्हें खरीदते हैं और जब वो crop को बेचते हैं. Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. सीजन के बिगनिंग में वो लोन लेते हैं और हार्वेस्ट के बाद वो पे कर देते हैं. रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशल डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग. सो रीपेमेंट लोन का डिपेंड करता है फार्मिंग इनकम कितना होता है फार्मिंग से. In Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible.
She had to sell part of the land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna, improved her earnings. ठीक है, तो क्या हो गया, हेल्प करने के अलावा स्वप्ना के उनके अर्निंग्स को क्या हो गया, वर्स हो गई, वो खराब हो गए. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप. Credit, in this case, pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Credit इस केस में क्या हो जाता है, उस borrower को ऐसी situation में डाल देता है जहाँ पे रिकवरी होना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes that person into a debt trap. और ये debt trap में कौन फंसी स्टूडेंट, स्वप्ना. To repay her loan, she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. पहले जैसे थी उससे भी कहीं बदतर हो गई थी उनकी हालत. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in the case of loss. અહીં देखते हैं terms of credit क्या क्या है. Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. ठीक है, सो हर लोन एग्रीमेंट कहता है कि एक इंटरेस्ट रेट लगेगा जितनी अमाउंट बोरो की जाती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जितनी मनी लिया है उससे उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा. इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, यानी डिपॉजिट भी मांग की जाती है स्टूडेंट्स. कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स. बोरोवर का कोलैटरल एक एसेट हो जाता है जो सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स. अगर आप एक घर रेंट पे लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जो डिपॉजिट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोलैटरल कहते हैं. इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. अगर बोरोवर फेल करता है लोन रीपे करने के लिए, तो लेंडर के पास राइट है एसेट को बेचने का और कोलैटरल से पेमेंट लेने का. प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलैटरल यूज फॉर बोरोइंग. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 45 पे हैं. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called terms of credit. So interest rate, collateral और जो documentation चाहिए होता है repayment करने का, इस सबको कहा जाता है terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. Vary यानी कि अलग अलग होता है एक credit agreement arrangement बाकियों से. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. Lender और borrower पे depend करता है students. The next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangement. Okay students, अब हम पेज नंबर 48 पे हैं. Formal sector credit in India. We have seen in the above example that people obtain loans from various sources. बहुत सारे sources है जहाँ से loan लिए जा सकते हैं students. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperatives. So formal sector में क्या आता है, banks आता है और cooperatives आता है. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends etc. ये सारा informal आ जाता है. In graph 1 you can see the various sources of credit to rural households in India. Rural households in India में credit किस किस तरीके से दिया जाता है उसका bifurcation दिया है students. Is more credit coming from the formal sector or the informal sector? कहाँ से आ रहा है ज़्यादा credit? The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. Reserve Bank of India जो formal sources of loan होते हैं उसे देखती है. For instance, we have seen that the bank maintains a minimum cash balance out of the deposits they receive. Minimum cash balance maintain करती है 15% जो deposits उन्हें दिए जाते हैं. The RBI monitors the banks in actual maintaining cash balance. वो देखती है कि cash balance maintain किया है या नहीं. Similarly, the RBI sees that the bank give loans not just to profit-making businesses and traders but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. छोटे-छोटे industries को भी क्या वो loan दे रही है. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom they are lending, and at what interest rate, etc. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. Informal sector में organize करने के लिए कोई नहीं है. आपने अगर आपके फ्रेंड से पैसे लिए हैं उसे मॉनिटर करने के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा. करेक्ट. They can lend at whatever interest rate they choose.
There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. वो कुछ भी कर सकते हैं अपना पैसा वापस लौटाने के लिए, क्योंकि ये इनफॉर्मल है स्टूडेंट्स. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher rate of loans. Formal lenders से ज़्यादा आजकल informal lenders high rate of interest charge करते हैं. Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher. Higher cost of borrowing means a large part of the earnings of the borrowers is used to repay the loan. हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके अर्निंग में से जाता है लोन रीपे करने के लिए. Hence borrowers have less income left from themselves as we saw from श्यामलाल इन सोनपुर. ठीक है, बोरोवर्स के पास लेस इनकम बचता है उनके लिए. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. कुछ केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई हो जाता है कि जो पैसे जितने कमाए जाते हैं उससे ज़्यादा इनकम बोरोवर के पास जाता है. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट. इससे डेट बढ़ सकता है. एंड डेट ट्रैप. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. Enterprise यानी खुद का बिजनेस अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि लोन के रीपेमेंट या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. For these reasons, banks and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. So cheap rates पे बहुत सारे लोग borrow कर सकते हैं. They could grow crops, do businesses, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. Country के development के लिए cheap और affordable rent यानी credit यानी interest बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Formal and informal credit, who gets what? यहाँ पे नीचे एक ग्राफ दिया है. इट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज. क्योंकि रूरल एरियाज में भी होता है स्टूडेंट, लेकिन अर्बन एरिया का डेटा दिया है. द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम poor to rich as shown in the figure. You can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. So 85% loans informal sources से लिए गए हैं. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of the loans are from informal sources. Rich urban households में 10% informal sources से लिए हैं, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, where the poor households have to pay a large amount for the borrowing. Poor households को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, high rate of interest पे करना पड़ता है borrowing के लिए. What does this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needed for the rural people. The formal sector है, it meets the demand of only half of the total credit which is needed for the rural people. The remaining credit needs are met from the informal sources. बाकी के जो needs है students वो informal sources से meet किए जाते हैं. Okay students, we are on page number 50. Most loans from informal lenders carry a very high rate of interest and do little to increase the income of the borrower. So borrower का पैसा तो बढ़ता नहीं है और rate of interest भी काफ़ी high है. Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependency on informal sources of credit reduces. So banks को cheap rate of interest में loan देना चाहिए students rural areas में, ताकि dependency जो है वो informal sources की कम हो जाए. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. सबको मौका मिले लोन का. At present, it is the richer households who receive formal credit, where the poor have to depend on the informal sources. अभी के टाइम में richer households को मिल रहा है, but poor को depend करना पड़ रहा है. It is important that the formal credit is distributed more equally, so that the poor can benefit from the cheap loans. Self-help groups for the poor. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is that so? Banks are not present everywhere in rural India. हर rural area में banks available नहीं है students, right? Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. बैंक अगर present भी होंगे फिर भी लोन लेना बैंक से मुश्किल है, इसलिए लोग informal sources देखते हैं.
As we saw from Megha, bank loan requires proper documents. बैंक लोन के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए और कोलैटरल चाहिए, डिपॉजिट चाहिए. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loans. Informal lenders such as money lenders, on the other hand, know the borrowers personally and hence they are often willing to give a loan without collateral. So ये जो informal sources हैं वो तो borrowers को अच्छे से जानते हैं, इस वजह से वो आउट ऑफ विल उन्हें लोन दे देते हैं विदाउट कोलैटरल. द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन. However, the money lender charges very high rates of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं रखते ट्रांजैक्शन का और लोगों को शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and pool collect their savings. और उनके savings को collect किया जाता है students. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. ठीक है, और वो क्या करते हैं? वो एक साथ मिलते हैं और वो save करते हैं. Saving per member varies from ₹25 to ₹100 or more. डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव. कितना वो सेव कर सकते हैं उस हिसाब से वो सेव करते हैं. मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. और मेंबर्स छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं इन ग्रुप से अपने नीड्स को मीट करने के लिए. द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस दैन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस. ग्रुप चार्ज करती है इंटरेस्ट बट वो फिर भी कम है मनी लेंडर के चार्जेस से. After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. अगर ग्रुप रेगुलर है सेविंग से तो वो एलिजिबल हो जाती है बैंक से लोन लेने के लिए. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. Loan sanction होता है और इससे इस ग्रुप से क्या होता है? employment opportunities मिलते हैं members को. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage land, for meeting working capital needs, etc. ठीक है, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को. For housing materials, for acquiring assets like sewing machines, handlooms, cattle, etc. Most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. Group member decisions लेते हैं students. The group decides as regards the loans to be granted. To be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. तो ये group वो चीज़ें plan करती है students. Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. और ये group responsible होता है loan repayment के लिए. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. अगर कोई रीपे नहीं कर पाता स्टूडेंट्स एक भी मेंबर ग्रुप का तो उसके ऊपर फॉलोअप किया जाता है बाकी मेंबर्स के तौर पर. बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs. तो बैंक्स को मोटिवेशन मिलता है लेंड करने का पैसा पुअर वुमेन्स को इवन दो दे हैव नो कोलैटरल एज सच. अगर उनके पास कोई डिपॉजिट नहीं है फिर भी. Thus, the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. उनको लोन मिल सकता है बहुत सारे purposes के लिए अच्छे rate of interest पे. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. So students, ये जो SHG group है वो सिर्फ women को independent नहीं बनाता है, वो meetings regular conduct करता है ताकि एक ऐसा platform बनाए women के लिए जहाँ पे सोशल इश्यूज़ जैसे हेल्थ रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड और डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की जाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.